Welcome to Conceptual Learning Academy with MCQs on fundamentals of computer. Today we are discussing most important and repeated MCQs on fundamentals of computer. Please subscribe Conceptual Learning Academy. Question number 1. Which of the following is not a type of computer system? Analog, digital, hybrid, mechanical. The correct option is mechanical. मैकेनिकल किस्म का कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं है. Question number 2. What does RAM stand for? Random access memory, read-only memory, redundant array of memory, real access memory. The correct option is random access memory. RAM का मतलब random access memory है. Question number 3. Which of the following is not a common computer input device? Keyboard, mouse, printer, स्कैनर. द करेक्ट ऑप्शन इज प्रिंटर. प्रिंटर का शुमार कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस में होता है, न कि इनपुट डिवाइसेस में. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर? बाइट, बिट, मेगाबाइट, गीगाबाइट. द करेक्ट ऑप्शन इज बिट. Question number 5. Which of the following is a type of computer programming language? Java, MS Word, Adobe, Google. The correct option is Java. Java एक किस्म की computer programming language है. Today we are discussing most important and repeated MCQs on fundamentals of computer. To support us, please like, share this video and do comment, and also subscribe Conceptual Learning Academy. हमारे मोटिवेशन के लिए कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सॉफ्टवेयर दैट रन्स प्रोग्राम्स एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज. हार्डवेयर दैट रन्स प्रोग्राम्स एंड मैनेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर. सॉफ्टवेयर दैट encrypts and decrypts data. The correct option is software that runs programs and manage computer hardware resources. ऑपरेटिंग सिस्टम उस सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि प्रोग्राम्स को रन्स करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है उसको सॉफ्टवेयर के साथ. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? लैन, वैन, मैन, VPN. The correct option is VPN. VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कहते हैं. अगर आप इस तरह के बहुत से कंप्यूटर एब्रिविएशंस को सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ अ वायरस? कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स. Malware that can replicate itself and spread to other computers. Computer network that connects multiple computers together. The correct option is malware that can replicate itself and spread to other computers. वायरस एक इस तरह का malware है जो कि खुद बहुत रिप्लिकेट होता है, मतलब खुद बहुत खुद को कॉपी करता है और वायरसेस को प्रोड्यूस करता है और स्प्रेड करता है अदर कंप्यूटर्स या अदर प्रोग्राम्स पे भी. Question number 9. What is the process of converting analog information into digital information called? Encoding, decoding, modulation, demodulation. The correct option is encoding. जब हम एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, तो इस प्रोसेस को एनकोडिंग कहते हैं. Question number 10. Which of the following is a storage device that uses flash memory to store data? Hard disk drive, solid state drive, optical drive, floppy disk. The correct option is solid state drive. Solid state drive storage डिवाइस है जो कि फ्लैश मेमोरी को यूज़ करता है. Question number 11. What is the meaning of CPU? Central Processing Unit, Central Power Unit, Central Processing Ultrabook, Central Personal Unit. The correct option is Central Processing Unit.
अगर आप इस तरह के और एब्रिविएशन सीखना चाहते हैं तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। द करेक्ट ऑप्शन इज कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट डिवाइस। Question number 13. Which of the following is an example of a secondary storage device? RAM, ROM, hard disk drive, cache memory. The correct option is hard disk drive. बाकी जितने भी ऑप्शन थे वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस थे। हार्ड डिस्क ड्राइव जो दिया गया है इस क्वेश्चन में यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 14. What is the function of an operating system? To provide a user interface, to manage computer resources, to process data, to store data. The correct option is to manage computer resources. Operating system का काम है computer resources को manage करना। Question number 15. What is the full form of GUI? Graphical User Instruction, Graphical User Interface, General User Interface, General User Instruction. The correct option is Graphical User Interface. Question number 16. What is the full form of LAN? Local Area Network, Large Area Network, Long Area Network, Low Area Network. The correct option is Local Area Network. LAN का LAN Local Area Network का abbreviation है। Question number 17. Which of the following is a web browser? Photoshop, Chrome, Microsoft Word, Adobe Reader. The correct option is Chrome. Chrome एक web browser है। Question number 18. Which of the following is an input device? Printer, keyboard, monitor, speaker. The correct option is कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बाकी जो दिए गए थे वो आउटपुट डिवाइसेस है। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क, CD रोम, रैम, प्रिंटर। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रिंटर। इस क्वेश्चन में जो बाकी ऑप्शन दिए गए थे वो स्टोरेज डिवाइसेस थे। प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is not an operating system? Windows, Linux, iOS, Adobe Photoshop. The correct option is Adobe Photoshop. Adobe Photoshop एक operating system नहीं है, बाकी सारे options operating system थे। Question number 20 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। MCQs ऑन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के सीरीज़ के बाकी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर दी जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी।